हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज। कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल+B बोल्ड, कंट्रोल+C कॉपी, कंट्रोल+D डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट, कंट्रोल+E सेंटर, कंट्रोल+F फाइंड, कंट्रोल+G गो टू, कंट्रोल+H रिप्लेस, कंट्रोल+I italics, कंट्रोल+J justify, कंट्रोल+K hyperlinks, कंट्रोल+L aligns text left, कंट्रोल+M hanging indent, कंट्रोल+N new documents, कंट्रोल+O open other documents, कंट्रोल+P print, कंट्रोल+Q add space before paragraphs, कंट्रोल+R aligns text right, कंट्रोल+S save as, कंट्रोल+T left indent, कंट्रोल+U underline, कंट्रोल+V paste, कंट्रोल+W close documents, कंट्रोल+X cut selected text, कंट्रोल+Y redo the last actions performed, कंट्रोल+Z undo last actions, कंट्रोल+1 single space line, कंट्रोल+2 double space line, कंट्रोल+5 1 to 5 line spacing, control+delete delete one word to the right of the cursor, control+backspace deletes one word to the left of the cursor, control+end move cursor to the end of the documents, control+home move cursor to the beginnings of the documents, control+left arrow move one word to the left, control+right arrow move one word to the right, control+up arrow move to the beginnings of the lines or paragraphs, control+down arrow move to the end of paragraphs, F1 open help, F7 spell check, F12 save as, control+alt+1 change text to heading 1, control+alt+2 change text to the headings 2, control+alt+3 change text to the heading 3, control+space resets highlighted text to default font. Thank you.